Hey there, welcome back to the channel. So this is your Ramandeep Singh and I'm back with yet another video tutorial in this series, and today we're going to be solving this problem, which is uh, maximum sum of distinct subarrays with a length k. So basically, like I have prepared a doc. So this is a doc which I have prepared. Again, preparing for interviews, this doc is helpful, and I'm again revising the concepts, but this time topic wise, pattern wise, not patterns. So the first pattern which I'll be explaining to you is sliding window. No? So it's sliding window. It's also very alias to two pointers technique, which we call it two pointers technique. No? So let's jump to the, let's see how it actually works. So let's open up the docs and docs Excalibro. ठीक है, तो इस पे समझते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम मैक्सिमम. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस two pointers technique, or we can say sliding window technique. Let's see. So basically, what is there in two pointers technique? Usually it's a simple thing, not a very big deal. Usually we have an array. ठीक है. So we have a kind of array, and then we have to select a certain subarray. ठीक है. So here we have the starting point. Let's call it start, and then we have an ending point. Let's call it end. So this is the first pointer. This is the second pointer, or we can say this is the front pointer, this is the back pointer, and this region inside this between these two pointers is called a window. We can say it's a window, है ना. Now based on the constraints of the problem, है ना, which we have been given, like for instance find maximum sum of window size k, something like this maximum product, है ना. And then we may have other things like find the largest subarray with something like this, है ना, xyz constraints. So these type of patterns, if you observe somewhere, है ना, then you may think of this sliding window approach. ठीक है. For instance, let's take a quick example for the same technique which we have here, and the example is clear. This one, it is maximum sum of distinct subarrays with length k. ठीक है. तो इसमें क्या दिया है कि you are given an integer array. Let's read the problem statement. So you're given an integer array nums and an integer k. Find the maximum subarray sum of all the subarrays of nums that meet the following conditions. ठीक है. तो basically we have been given a integer array. ठीक है. We have been given an integer array and the array name is nums. We have also been given an integer k, and we are supposed to find the maximum subarray sum of all the subarrays of nums that meet the following condition. So we have been given two conditions. ठीक है. So let's see what are those conditions. The first is the length of the subarray is k, and the second is all the elements of the subarray are distinct. ठीक है. Return the maximum subarray sum of all the subarrays that meet the conditions. If no subarray meets the condition, returns true. ठीक है. So basically we are supposed to find the sum of a subarray, and the size of the subarray should be k. ठीक है. And all of the elements in that k size subarray should be distinct. ठीक है. They should be distinct, and the sum which we calculate in that subarray should be maximum possible out of all such subarrays. ठीक है. So there can be many such subarrays, है ना, but the sum should be maximum of the sum for the result subarray which we are looking for should be maximum of all the subarrays which are present there. Okay. So let us see how we will solve this problem. आते हैं इस पे 1542999 इस पे आते हैं 1542
एग्जांपल लेते हैं 1 5 4 2 9 9 9। ठीक है, तो k इज 3, सो दिस इज 3 है ना। So we are supposed to find a subarray of size 3 with three distinct elements. The three elements should be distinct, and the sum should be maximum possible. So for instance, let's take the first three elements. 1 plus 5 plus 4, it's going to give you 10. Okay, then 5 plus 4 plus 2. So first window is 1 5 4, window of size 3. All the elements are distinct, so we can add them up. It's a valid one. Take the next one, 5 4 2. Yes, 5 plus 4 is 9, 9 plus 2 is 11. We got a better answer. Let's move to the next window, 4 to 9, 9 to 11 plus 4 15. We got yet another better answer. Then we move to the next window, which is this 299. No, not a valid window because we have two duplicate elements here. Then the last one, no, not a valid one because we have three similar elements here. Okay, so what we're going to do is we are supposed to find the answer for this one. The answer for this one is 15 for this window. This is a valid window. 9 to 11 plus 4 15. That's your answer. Cool, eh? So how we will solve this problem? 15 है ना इसका आंसर, 15 है. Now, so let us see how we will be solving this problem in this example. कैसे करेंगे इसको? तो एक तरीका तो ये है कि what we can do is we can generate all the subarrays. Subarrays of length k. ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल है, एक लूप रन करो. ठीक है, एक लूप रन करो. कहाँ से लेके? 0 से लेके लास्ट तक, नहीं लास्ट माइनस k तक. क्योंकि जो लास्ट सबअरे होगा वो हमारा k लेंथ का होगा ना. तो द लेंथ ऑफ दिस एंटायर अरे इज n, then we will run a loop from 0 to n minus k. So loop, or let's call it iterate I is the iterator 0 to n minus k. N minus k is excluded. 1 2 3 4 5 6 7, 7 minus 3 is 4, 0 1 2 3 4. Cool है, yeah, excluded. This plus k है ना. So now again run a loop, iterate from I to I plus k. Cool है. ठीक है, excluded. Now sum. So since we are iterating from I to I plus k, we will be adding these answers, sum nums of j. ठीक है. So now once this iteration is done, once I'm out of this internal loop, I'll be here, and here also I'll have to keep a check whether all the elements are distinct or not. So for that I can use a hash map. So keep a hash map here, keep a hash map here. So you can declare a hash map here, hash map, let's call it mp, and we will check if the current element, which is nums of j, is there in the map. Then only you add, otherwise you continue. Not continue, but we can say break.
break out of this loop. ठीक है. Now you break out of this loop, without completing the k iterations, or means without completing the k subarray sum. So that means once you are out of this iteration, if you are out after completing all the k iterations, then it's fine. If you break out, like if you break out because of this condition that you got some duplicate element in the current subarray, then in that case you have to continue. In that case just continue and again take the next window. Otherwise if you do not continue, then this sum is recorded. So in the final answer you're gonna store this sum, max of the answer comma this sum. So you can update the answer there with this sum. So this is one of the approaches to solve this problem. Now what is the time complexity for this? This goes from 0 to n, and this so what is the time complexity? N into k, है ना, n into k. Are n and k are related? No, they are not, है ना. So this is the time complexity. So can we do better than this? Let's see. So what we can do here is 1542999 1542999, ये हमारा array है. So in order to solve this problem, what we can do is let's take 0 1 2 3 5 6. ठीक है. तो क्या कर सकते हैं अपने कि for this thing what we can do is we can use क्या कहते हैं इसको, this is nums and this is k. So what we're gonna do is ठीक है, we can use this two pointer technique, है ना, जो अपने पढ़ रहे हैं basically sliding window thing, that we can use. So we can use sliding window. How? Let's see how. So we will start with the start pointer. So we'll keep a pointer here, then we also keep a pointer here, both pointer initialized to 0. Then what we're going to do after that, we will run a loop until this end crosses the last index, which is 6. Okay. Then what after that? So iterate until this end is less than n. First thing. Now here keep a running sum. Initialize it to 0. So running sum is nothing but you are just adding, you will just add the current element. You will add the current element in the window. Cool है ना? You will add the current element in the window. So running sum. अच्छा, before adding the current element in the current of the current window, you got to check whether in the current window you have already encountered that element before or not. If you have encountered that element before, that means you are not allowed to add this element, because this window is not going to work. This window is not a valid one. So for that I need a check. So what type of check I can keep? So for instance here let's say I encounter इस पे थोड़ा बेटर एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए. चलो ठीक है, इसी भी चलते हैं.
तो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट कि भाई ठीक है, करंट एलिमेंट was already present somewhere. How to detect? How to detect that? For that, I can keep a hash map. Hash map would be more of like ki, it would be like num's current element, num to index, num to index. So this basically what this dictionary or hash map does is store the element versus its index. स्टोर द एलिमेंट वर्सेस इट्स विद इट्स इंडेक्स. ठीक है, ये करता है, ये कूल है. तो कैसे इस चीज़ के लिए अपन कर सकते हैं? तो इसको कैसे बेटर कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेक इट बेटर? सो फॉर दैट क्या कर सकते हैं अपने? हाँ, नहीं सॉरी, इसका यूज़ क्या है, इसका लाभ क्या है इसमें? इसका लाभ यही है कि नम टू इंडेक्स जो है वो स्टोर करेगा इंडेक्स फॉर द करंट एलिमेंट. तो बिफोर वी ऐड दिस एलिमेंट वी फर्स्ट चेक कि क्या ये कहीं उसमें है तो नहीं. तो इसका लास्ट अकरेंस स्टोर करते हैं. लास्ट अकरेंस देखते हैं, इसका लास्ट अकरेंस देखते हैं इस करंट एलिमेंट का. तो वो इसमें पड़ा होगा नम टू इंडेक्स, नम्स ऑफ समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो इससे अपने को यहाँ लास्ट अकरेंस मिल जाएगा इसका. ठीक है, वी विल गेट द लास्ट अकरेंस ऑफ दिस एलिमेंट. अब देखो, अब दो केसेस हैं. वाइल एंड माइनस बिगिन प्लस 1 इज लेस देन के. अगर तो विंडो का साइज छोटा है, या फिर ये जो लास्ट अकरेंस है ये क्या है? -1 है. तो लास्ट अकरेंस आ गई. अब वाइल या तो विंडो का साइज़ के से छोटा है, या फिर ये जो लास्ट अकरेंस हमने इसकी ढूंढी है, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ ये -1 है. मीन्स दिस एलिमेंट डिड नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, दिस एलिमेंट डिड नॉट एग्जिस्ट इन द करंट विंडो, है ना. ठीक है, या तो विंडो का साइज छोटा है, या फिर ये जो लास्ट अकरेंस है ये क्या है? इफ़ इट इज़ -1 तो इसका तो मतलब ठीक है. सॉरी, इट्स नॉट द 1, सॉरी, इट इज़ -1. फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर वो लास्ट अकरेंस मेरे को मिल जाती है लेट्स से एंड के बाद, ग्रेटर देन बिगिन, ग्रेटर देन और इक्वल टू बिगिन, है ना, मोस्ट प्रॉब्ली. कि भाई करंट विंडो की स्टार्टिंग पे या उसके बाद है ये जो लास्ट अकरेंस है उस एलिमेंट की. इन दैट केस आई एम गोना कीप एडिंग द एलिमेंट्स, है ना. आई एम गोना कीप एडिंग द एलिमेंट्स एंड मूविंग द विंडो अहेड. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस विंडो को स्लाइड करूँगा. क्या करूँगा? स्लाइड करूँगा. ठीक है, कैसे करूँगा? तो जो कहाँ ये करंट जो हमारा रनिंग सम है उसमें मैं क्या कर दूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा. क्या? आई एम गोना सब्ट्रैक्ट दिस. अच्छा ये सॉरी, ये उल्टा बोल दिया मैंने. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन के, अगर जो करंट विंडो है वो के से बड़ी हो जा रही है, तब बिगिन को आगे शिफ्ट करना है. ठीक है, या फिर लास्ट अकरेंस जो है उस करंट एलिमेंट की वो उस विंडो के अंदर लाई कर रही है, तो इसका मतलब हमें इस विंडो को आगे शिफ्ट करना है. ठीक है, इस विंडो को आगे शिफ्ट करना है. क्यों शिफ्ट करना है पता चल गया होगा. रनिंग सम माइनस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ क्या है, बिगिन
और ये जो बिगिन है इसको एक यूनिट आगे बढ़ा दो। कूल है, यही है। So once you're out of this loop, you have balanced the window. That means you have a valid window, है ना? You have a valid window once you are out of this internal while loop. And at this point, what you can do is you can record this last occurrence of the current element. The current element is this, which is present at this end, है ना? तो क्या कहते हैं इसको, इंडेक्स टू नम। इसमें क्या करना है अपने को, जो करंट है हमारा एलिमेंट नम ऑफ एंड, इसको क्या कर देना है, इस हाँ ठीक है, इसमें अपने क्या ऐड कर देंगे, एंड ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा रनिंग सम है इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है नम्स ऑफ एंड। ठीक है, कूल है, यही करना है ना। अब इफ़ अगर जो हमारा एंड माइनस बिगिन प्लस वन अगर वो के इक्वल है तो हमारा आंसर है, उसको कर देंगे अपने मैक्स ऑफ आंसर कॉमा रनिंग सम जो है हमारा। ठीक है, इसको कर देंगे अपडेट एंड वी gonna मूव द एंड by 1 unit ahead, and finally we will return this answer at the end of this function. So that's how it will work, है ना? I hope you got it, and you need a little bit of knowledge of this sliding window thing. Maybe I must have missed a lot of things here. Pardon me for that, because I don't want to reinvent the wheel again and again. You may find more detailed analysis of this technique in some other video, in maybe in upcoming video. So this was a more of a like a revision thing. So I was revising this sheet because I'm also preparing for the technical interviews. So that's why I just rushed through this code. Okay, so thank you so much for that. Let's jump to the code implementation. So it's simple, all we have to do is we have an answer, initialize it to 0, and then we have this what do we call, we have this running sum which is 0, and then we have a begin 0 and 0 while and less than, that's fine. And here, yeah, you also need a hash map. Let's call it num to index like this. And here what we will be doing is we will be क्या करेंगे, क्या करना था इसमें, लास्ट अकरेंस ढूंढनी, लास्ट अकरेंस नम टू इंडेक्स फॉर दिस नम्स ऑफ इंडेक्स कैसे निकालते थे, इस गेट करके ना, क्योंकि देयर मे बी नो अकरेंस इन दैट डिक्शनरी. Get nums of this and yeah comma -1. ठीक है, अब while and minus begin is greater +1 greater than k, or this last occurrence is greater than equal to begin. So we do not have a valid window, so for that what we're going to do is we're going to subtract from the running sum the current element nums of what, not and begin. So I'm shifting this
लेफ्ट साइड है ना. So begin plus plus, and once I'm out of this loop, what we'll do is क्या करेंगे इसके बाद. So what we're gonna do is we will be इस लूप से बाहर आने पे अपने क्या करना है हमें. ठीक है, इधर शिफ्ट कर रहे हैं. एंड वंस आई एम आउट ऑफ दिस आई एम गोइंग टू record the last occurrence of nums of end at end, and current sum में मैं ऐड कर दूंगा nums of end और end को एक मिनट आगे बढ़ा दूंगा. और I'm gonna also check if end minus begin plus 1 is equal to क्या. k है ना. then what k है ना, ये k ही है ना. हाँ k ही है. तो जो हमारा आंसर है मैक्स ऑफ आंसर कोमा गया, जो हमारा रनिंग सम आ जाएगा. ठीक है, कूल है. और एट द एंड आई विल रिटर्न आंसर. ठीक है. अच्छा हाँ सॉरी, नम टू इंडेक्स है नॉट लास्ट. गड़बड़ कर दी. ठीक है, नॉट करंट सम, इट्स रनिंग सम. got accepted, so let's jump, let's submit it. सबमिट हो गया होगा, हो गया सबमिट. ठीक है. तो दिस वॉज बेसिक ग्लिम्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक. सो वी यूज 2 pointers, start of the window and end of the window, and we slided the window by 1 unit ahead. जैसे मतलब एक तब तक उसको यहाँ पे मतलब व्हाट वी डिड इज़ दिस थिंग इज़ सिंपल कि भाई अगर तो मेरे को करंट विंडो में कहीं पे जो लास्ट एंड ऑफ द विंडो वाला एलिमेंट कहीं पे अंदर मिल गया, ठीक है, तो भाई उस एलिमेंट से अब नई विंडो शुरू होगी. उस एलिमेंट के आगे से, आगे वाले एलिमेंट से एक नई विंडो शुरू होगी. तो तब तक जो लेफ़्ट पॉइंटर है इसको आगे मूव कराते जाओ. यही कर रहे हैं अपने यहाँ पे पहला केस. या फिर जो हमारी करंट विंडो है वो एक्सीड ही कर गई है के को, है ना, तब बिगन को आगे बढ़ाओ. 2 ही केसेस में बिगन को आगे बढ़ाना है. ठीक है. और एंड को हम हर इटरेशन में आगे बढ़ाते जाएंगे. सिंपल एज दैट. ठीक है. सो दिस, अब व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर दिस. वी कैन सी दैट द टाइम कम्प्लेक्सिटी इज़ लीनियर. वाई? क्योंकि द विंडो एक्चुअली पासिस थ्रू ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस. लाइक मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप देखो इसको ध्यान से तो वी हैव एन अरे लाइक दिस एंड लेट्स से वी हैव अ विंडो लाइक दिस. सो दिस विंडो actually it's more of like slides like this, like this, like this, like this, like this, in case when all the elements are distinct. So it's basically leaving one element out and taking in one element, leaving one element out, taking in one element, like this, 1 unit ahead. So it's more of like कि moving a slide, क्या कहते हैं उसको, moving a skateboard over a surface from point A to point B.
ठीक है, so it's big of n linear. Then we have this time अपना space complexity. So the space complexity, we're using a hash map which may store all the elements big of n. So that's all for this problem. This was the first problem of this interview preparation sheet which I solved, and I hope you got something out of it. We'll jump to the next problem in the next video. Till then, keep solving problems and keep learning. uh, Stay healthy, है ना, the most important thing, and take care. Bye bye.